Good morning, students. This is your teacher Neela Bahlawat, and today we'll continue with the topic that is digestion of food. So, this is our lecture number 5. Okay, and I hope you remember the components of the alimentary canal and you do remember the digestive glands associated with it. Now, today we'll continue with that process, that is digestion, how digestion occurs in human beings. Okay, so you be ready, students. We'll start with this topic. Now, see how digestion occurs. We have talked about the various structural and functional components. Now, we'll see how this process of digestion occurs. Now, see, we will put the food in our mouth. Okay, the food will be kept in the mouth. In mouth, you will have two things. One is the teeth and the tongue. They will function, right? So, teeth and tongue, they will mix the food with saliva. Okay, teeth will chew the food. They will, you can say, tear the food. Okay, and tongue will give you the taste of the food. It will mix the components of the food with saliva. Okay, so three things. So teeth will help in chewing, cutting and tearing. Tongue will give you the taste, and both of these components, they will mix the food with saliva. Okay, and this the food mixed with saliva is called bolus. Okay, then this bolus will be swallowed by us. This bolus will be swallowed by us and it will go to the esophagus. तो हमें भूख लगी है, हम खाना खाएंगे. टीथ जो है उस खाने को स्मॉल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज टीयर करेंगे, च्यू करेंगे. टंग हमें टेस्ट बताएगी. दूसरा, टीथ एंड टंग टुगेदर विल मिक्स द फूड विद सलाइवा, एंड देन this food mixed with saliva is called bolus and it will be swallowed into the esophagus. Okay, now from esophagus the food will go to stomach. स्टमक में जो है हमारा खाना 4 से 5 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने के लिए. नाउ इन स्टमक द फूड विल बी मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस. ओके, द फूड विल बी मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस. एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस? म्यूकस, HCl, pepsin, isn't it? These are the main components that we have talked about. So खाना मुंह से स्टमक में पहुंच गया. स्टमक में हमारे पास म्यूकस है, HCl है, पेप्सिन है, एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस. नाउ फूड विल बी मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस. ओके, एंड दिस फूड इज कॉल्ड chyme. Okay, this food is called chyme. Now what happens, how digestion will take up the each nutrient separately. कार्बोहाइड्रेटाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? ठीक है, सबसे पहले खाना जब हमने बकल कैविटी में पहुँचा है, यानी व्हेन इट इज बीइंग मिक्स्ड विद सलाइवा. सो सलाइवा हैज़ सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज है. और ये स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है विल कन्वर्ट इनटू माल्टोस. ओके, इट विल कन्वर्ट इनटू माल्टोस approximately 30%. ओके, नाउ सपोज करिए कभी अगर आपने आंवला खाया है. सो आंवला, इट इज़ वेरी बिटर इन टेस्ट, बट स्लोली एज यू chew it, okay, as you chew it, it starts tasting sweeter. That is because the starch is being converted into sugar, that is maltose. Now from here, from mouth, the food will go to stomach. The food will go to स्टमक. स्टमक में कोई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का. प्लस इफ़ सलाइवरी अमाइलेज, कुछ अमाउंट में सलाइवरी अमाइलेज खाने के साथ मिक्स होकर अगर स्टमक में आ जाता है तो HCl जो है, इट विल स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. ओके, इट विल स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. देन द फूड विल गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन. So in the small intestine, there are various enzymes that we have discussed. One is amylase, second is maltase, lactase and sucrase. These are the enzymes. Okay. Now amylase will convert starch, the leftover starch. 70% starch अभी हमारी बच गई है because 30% यहाँ convert हो गई थी. So 70% starch will be converted into maltose. Okay. Then
maltose will be acted upon by the maltase and will be converted into glucose. ठीक है. Then lactose है तो lactase will act upon it and will convert it into glucose. Sucrose है तो sucrase will act upon it and will convert into glucose. So जो हमारा फाइनल एंड द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट हमारे को हमारी बॉडी में कन्वर्ट होके मिलता है, दैट इज ग्लूकोज. सो कार्बोहाइड्रेटाइजेशन दो मेन जगह पर हो रहा है. इट इज आकरिंग एट टू मेन प्लेसेस. वन इज द बकल कैविटी एंड अनदर इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. देयर इज नो कार्बोहाइड्रेटाइजेशन इन स्टमक. नाउ कमिंग टू द प्रोटीन डाइजेशन. Now when we are putting the food here, there is no protein digestion in the buccal cavity or in the mouth. So there is no protein digestion in the mouth. Then the food will go to stomach. In the stomach, the protein digestion will start. Because in stomach there is gastric juice, and gastric juice contains HCl and the pepsin enzyme. Now this enzyme is in inactive form. It is in the form of pepsinogen. Pepsin जो enzyme है हमारा वो inactive state में होता है. It is not in working condition. Okay. So first of all, HCl will activate this enzyme and convert it into pepsin. Then this pepsin will act upon proteins and convert them into peptones and proteoses. This is a smaller you can say component of the protein. So सबसे पहले HCl जो है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा. Then the food will go to small intestine. Okay. Then the small intestine will perform the major functions. It basically has two main enzymes. One is trypsin. ठीक है, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिन. ओके, सेकेंड इज काइमोट्रिप्सिन एंड थर्ड इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. सो 3 मेन एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट विल हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन. ठीक है, ये तीनों एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेट में होते हैं. ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज. एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा और एंजाइम एक्टिव हो जाएगा. ये ट्रिप्सिन जो है ये इन बाकी दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा. तो अब हमारे पास 3 एंजाइम्स हैं एंड ऑल द 3 एंजाइम्स आर एक्टिव. नाउ ट्रिप्सिन विल एक्ट अपॉन द प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डाइपेप्टाइडेजेस. ओके, क्लियर है. सो प्रोटीन्स जो यहाँ पर कन्वर्ट किए गए थे, पेप्सिन ने कन्वर्ट किया है पेप्टोन्स में. इट विल एक्ट अपॉन द पेप्टोन्स एंड कन्वर्ट इनटू डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइड्स. नाउ डाइपेप्टाइड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स बाय अनदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड डाइपेप्टिडेज. ठीक है, डाइपेप्टिडेज. ओके, सो फाइनल प्रोडक्ट दैट वी हैव इन केस ऑफ प्रोटीन्स इज अमाइनो एसिड्स. सो हमारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या था? ग्लूकोज, दैट इज शुगर. एंड केस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन वी विल हैव अमाइनो एसिड्स. नाउ कमिंग टू द फैट डाइजेशन. खाना है, अगर उसमें कोई फैट मौजूद है, फैट मीन्स ऑयली, घी, so there is no protein digestion in the buccal, there is no fat digestion in the buccal cavity. It is not protein, it is fat. So there is no fat digestion in the buccal cavity. Then in the stomach also, only a small part of the fat is hydrolyzed by lipase. Stomach में एक enzyme है lipase that will only hydrolyze a small portion of it. So major portions will be done by the small intestine. In between there is a gland which is called the liver. Liver is your largest gland. Now if you remember, liver makes bile salts. Okay, liver makes bile salts, and those bile salts will be poured into the small intestine. Liver bile बनाता है, bile को gall bladder में store करता है.
ठीक है, और फिर उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर करेगा. नाउ दिस bile will act on fats and convert them into fat droplets. Okay, this bile will act on fat and convert them into fat droplets or fat molecules, and this process will be called emulsification. And this process will be called emulsification. Okay, this process will be called emulsification. इस प्रोसेस में क्या होता है कि फैट को कन्वर्ट कर दिया गया है और फैट का सरफेस एरिया बढ़ा दिया है. फैट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो स्फेरिकल होते हैं and the surface area is more. Surface area more means now more enzymes can act upon it. Okay, more enzymes can act upon it. Now, these fat droplets will be acted upon by the pancreatic lipase and they will be converted into fatty acids and glycerol. Pancreatic lipase है जो इन fat droplets पे act करेगा और इनको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा. सो फैट का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ग्लूकोज का कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट कंपोनेंट है ग्लूकोज. प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट कंपोनेंट है अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन. अगर हमारे खाने में थोड़े कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, so nucleic acids को convert only small intestine will do this process. So nucleic acids, they will be converted into nucleotides. Nucleotides will be converted into nucleosides and then they will be converted into sugar and bases. Okay, I hope this is clear to everyone. Now carbohydrates हमारे पास end products में आ गए हैं glucose, fructose, galactose, right? Proteins will be converted into amino acids, fats will be converted into fatty acids and glycerol. Now our body cannot use these components because they are highly complex. But our body can use these simple components in every process, okay, and can produce energy. So that is why we need digestion. सो इसीलिए हमें डाइजेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कॉम्प्लेक्स मटीरियल को हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती. हमारी बॉडी को उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे हमारी बॉडी उसे डिफरेंट कंपोनेंट्स में या डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ कर सके. सो नाउ वी हैव गॉट द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स एंड द सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स. Okay, so complete digestion occurs in the duodenum, that is a part of the small intestine. And the fully digested food is semi-fluid in nature. It is called chyle. Semi-digested होता है और उसको chyle कहते हैं. So small intestine में आपका 97 to 98% digestion complete हो जाता है. And if there is anything which is left, this 3 to 5% of digestion it continues in the large intestine also. ओके, क्लियर. अब जब खाना डाइजेस्ट हो गया है, यहाँ से खाने का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस पोर्शन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विल टेक अप टुमारो. सो कल का हमारा टॉपिक होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट. ओके, सो नाउ टुडे यू विल मेक नोट्स ऑफ दिस टॉपिक एंड यू विल रीड द पेज नंबर्स 61 and 62 of your NCERT. You will read these 2 page numbers, you will prepare notes, and you will beautifully draw all the diagrams and everything, and you will use blue sketch pen for the headings and subheadings. You can use a blue sketch pen even for drawing lines between the question answers or line between the 2 topics. Okay students? So well done. So bye everyone.